morning. Good morning all of you. Today's topic is stock and flow. Stock and flow. Firstly, we understand the meaning of stock. Stock means a quantity measured at a particular point of time. क्वांटिटी को मेजर तो क्या जा रहा है, चीज को मेजर तो क्या जा रहा है पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, मतलब हम चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो जब क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक. अब क्वांटिटी मेजर्ड at particular point of time. For example, on 1st January 2020, there may be rupees 20,000 on your bank account, and on 1st February there may be rupees 30,000 on your bank account. These are stock values because quantities are measured at a specific point of time, or we can say that quantity is measured at particular point of time. So stock means जहाँ मूवमेंट नहीं हो रही, विदाउट मूव, चीज इकट्ठी हो रही है पर मूव नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा. भाई फ्लो मीन्स मूवमेंट. Money or things move from one hand to another. So definition of flow: a quantity measured at specific पीरियड ऑफ टाइम. क्वांटिटी मेजर हो रही है पर एक पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड के बाद. स्पेसिफिक पीरियड आपका आवर्स भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है. फ्लो मीन्स जहां मूवमेंट हो रही. फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी. भाई पॉकेट मनी आती है, पूरा आप रख नहीं लेते ना, थोड़ी खर्च करते हैं, थोड़ी बचाते हैं, थोड़ा पेट्रोल, थोड़ा रिचार्ज, ये सारे खर्चे होते हैं. तो जब क्वांटिटी को मेजर आप स्पेसिफिक पीरियड में करें तो वो आपका होता है फ्लो. या आप बोल सकते हैं जब चीज मूव करें एक हाथ से दूसरे हाथ में तो वो आपके फ्लो हो जाते हैं. वही स्टॉक मीन्स अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब हम चीज को मेजर कर रहे हैं एक लंबे टाइम के बाद, या हम बोल सकते हैं जहाँ चीज मूव नहीं हो रही, चीज इकट्ठी हो रही है, उसे हम कहते हैं स्टॉक. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक मीन्स प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जितनी उतनी रहेगी तो वो स्टॉक है. एग्जाम्पल ऑफ फ्लो: पॉकेट मनी. अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक: राइस इन अ गोडाउन. एग्जाम्पल ऑफ फ्लो: सेल्स ऑफ राइस. When the rice sales, it moves from one hand to another. Number third, वेल्थ. यहाँ आप ले लीजिए इनकम. भाई फादर के इनकम है, रख थोड़ी ना लेते हैं वो लोग गद्दे के नीचे. वो इनकम क्या होती जाती है, धीरे धीरे खर्च होती जाती है. नंबर फोर्थ, स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. भाई स्पीड ऑफ अ कार, जब कार की स्पीड बढ़ेगी घटेगी तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो. और डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टॉक. क्योंकि डिस्टेंस उतना ही रहेगा, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है पर डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो सकता. तो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यहां ले लेंगे स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. Clear? So stock means a quantity measured at a particular point of time, and flow means a quantity measured over a specific period of time. Stock means without movement, चीज इकट्ठी हो रही, and flow means when things move from one hand to another, or when money moves from one hand to another. There are some examples of stock and flow. Stock means property. Flow, pocket money. Stock, rice in godowns. Flow, sales of rice. Stock, wealth. Flow, income. Stock, distance from Delhi to Mumbai. Flow, speed of a car going from Delhi to Mumbai. Good morning. Today's topic is four sectors of the economy. Four sectors of the economy. Always remember there are four sectors in the economy. Number first, household sector.
number second producing sector, number third government sector, and number four external sector. Household sector means it includes consumers or consumers give services to producing sectors. Producing sector provides services to household sector. Or we can say that producing sector generates income with the help of household sector. Government sector, it includes all welfare agency, law, defense, or we can say that government as a producer. External sector, it includes exports and imports of goods and services. So there are four sectors in an economy: household sector, producing sector, government sector, and external sector. Household sector means consumer sector, or we can say that consumers who gives services, goods and services to producer sector. Producing sector provides goods and services to household sector, and with the help of household sector, producing sector generates income. Government sector, it includes welfare agency, government as a producer, law, defense, order, etc. External sector, it includes export, imports of goods and services. So there are four sectors of the economy. Then real flow and money flow. Real flow and money flow. Real flow means there is no role of money, and money flow, there is no role of services. So real flow refers to flow of goods and services from among the sectors. So real flow means flow of goods and services among the sectors in the economy, and money flow means flow of money across different sectors. So firstly, real flow. There are two sectors. We assume that there are two sectors. Number one, household sector. Number second, producing sector. Household sector gives services to producing sector. Services to producing sector. In return, producing sector provides goods and services to household sector. So there is no role of money, like barter system, when goods are exchanged for goods. And in money flow, there are also two sectors: household sectors and producing sector. Household sector, producing sector gives factor payments to household sector. And household sector makes expenditure with that money to producing sector. So real flow means flow of goods and services across different sector, and money flow, flow of money from one sector to another. There are two sectors in real flow: household sector and producing sector. Household sector gives factor services to producing sector, and in return producing sector provides goods and services to household sector. In money flow, household sectors makes expenditure and producing sector provides factor payments to household sector.